So now, my dear students, in this video we shall be discussing about rocks and minerals, how are rocks interrelated to each other and how they help each other. Okay, now so before starting this video, let's take a small recap of the chapter inside our earth. Okay beta, so in the first video we have discussed about the layers of the earth. We have three layers of the earth. First is the earth crust, and second is the mantle, and third is the core. Earth is the first layer, mantle is the second layer, and core is the third layer beta. Okay, now core, it is the innermost layer of the earth is called the core, and the radius of the core is 3500 kilometer, and it is made up of nickel and iron, or we can say ferrous and nickel. And the mantle is the length of mantle, the second layer of earth, is approximate 2900 kilometer, and the earth crust length is 35 kilometer with the continental areas, and with the oceanic areas it is about 5 kilometer. Okay, so now we will come up to, and the radius of the complete earth beta, the radius of the complete earth is 6371 kilometer. Okay, 6371 kilometer beta. Okay, now we have discussed so far that we have three kinds of rocks: sedimentary rocks, igneous rocks, and metamorphic rocks beta. Okay, so now what is exactly the rock? The rock are any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Okay, and rocks are of three types: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. The igneous rocks are also called the primary rocks, and these are of two types: intrusive and extrusive rocks. Okay, so now we will discuss about sedimentary rocks and metamorphic rocks. So let's start our video. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. It is actually telling you about the volcano beta. Okay, कि जैसे जो लावा, हमें पता है कि लावा में क्या होती है, आग होती है, और आग हमें किस रंग की दिखाई देती है, रेड. ओके, सो रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट सरफेस, कि भाई पृथ्वी के अंदर से हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई प्रेशर की वजह से और हीट और एनर्जी जब बूस्ट अप हो जाती है तो उसमें एक स्पार्क होता है, और उस स्पार्क से वोल्केनो इरप्ट होता है, और तब वो मोल्टन मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल आता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and become solid. I told you this fact beta in the earlier video also, कि भाई कि जैसे वो वक्त के साथ वहाँ पे स्टेप पे आता है, बैठ जाता है, बैठने के बाद वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो कौन सी फॉर्म ले लेता है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है. ठीक है. Now rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. और ऐसे जो rocks पृथ्वी की सतह पे, बाहरी सतह पे, आउटसाइड पे बनते हैं, उन्हें कौन से rocks कहा जाता है बेटा? extrusive rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. Okay, for example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. और basalt rocks हमें कहाँ मिलते हैं? Deccan Plateau पे. कहाँ मिलते हैं बेटा? Deccan Plateau में. In the sides of south side में, like Hyderabad, Bangalore, on that side we found Deccan, and the basalt is also there. Now, sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks beta. Like sometime what happened, कि जो एनर्जी, एफिशिएंसी एंड प्रेशर मिलना चाहिए था लावा को, मोल्टन मैग्मा को इनसाइड द अर्थ से बाहर निकलने के लिए, वो नहीं मिल पाता है, और वो अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, और जो अंदर ठंडा होने के बाद वो अंदर भी सॉलिड फॉर्म ले लेता है, और जो सॉलिड फॉर्म से जो पत्थर बनते हैं, जो रॉक बनते हैं बेटा, उन्हें कौन से रॉक्स कहा जाता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज
grains, and granite is an example of such rocks. So example of intrinsic rocks are granite, and beta basalt is an example of igneous rocks. So grinding stone used to prepare paste powder of species and grains are made up of granite. Okay, now let me tell you a fact about igneous rocks. Beta, igneous rocks are those kind of rocks which carry the property of fire, heat in them. ठीक है, igneous rocks are those kinds of rock which carries the properties of fire and heat in them. Okay, good. Now let's move further. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. ओके बेटा, कि जैसे पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं और वो फिर एक दूसरे से साथ टकराते हैं. जैसे वो टकराते हैं तो वो टूट के उसमें टुकड़ों में बिखर जाते हैं और फिर इनटू स्मॉल पीसेस, और उन स्मॉल पीसेस को, उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है बेटा? सेडिमेंट्स कहा जाता है. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा. और वो फिर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो हवा के साथ और पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह पे डिपोजिट हो जाते हैं. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और फिर ये sediments अपनी प्रॉपर्टीज के साथ कंप्रेस और इतने हार्ड बन जाते हैं कि ये एक पत्थरों की सतह बना देते हैं. बेटा, लेयर्स ऑफ रॉक्स दे फॉर्म्ड एंड दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री rocks, and these types of rocks are called sedimentary rocks. बेटा, ठीक है. So for example, sandstone is made from grains of sand. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Okay बेटा, ठीक है. So the example of sedimentary rocks are sandstones and it is made up of grains of sand. These rocks may also contain fossils. And what are fossils? Fossils are the remains of dead plants and animals trapped in the layer of rocks. Plants, animals and other microorganisms that once lived on them, कि जो कभी उनके ऊपर रहे होंगे. ठीक है बेटा. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Students, tell me now, we all are living in our home and we have seen मार्बल फ्लोर्स आल्सो. ठीक है. एंड हमारे घरों में सबसे ज़्यादा मार्बल फ्लोर ही लगता है बेटा. जो मार्बल होता है वो लाइमस्टोन से बनाया जाता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. ओके बेटा. सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. So we can say that the metamorphic rocks are not natural rocks, but they are made with the help of igneous and sedimentary rocks, and in this way also the rocks help each other to become another rocks. ठीक है कि बेटा, एक दूसरे की मदद करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ नया पत्थर बनाने के लिए. ठीक है. अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. ओके बेटा. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू मैन. ओके, और यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. They hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones pittu, hop scooch stapu, kit, 5 stone gitty. And I am giving you this homework. You will write approximate 6 to 7 points on the uses of rocks. Okay. What are the uses of rocks? Give 6 to 7 points. Okay. Now we have an activity. So all we know, this is Red Fort and it is located in Delhi.
and this is Taj Mahal. This is located in Agra, and it is a white building and it is a red building. Okay, so now you have to collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. Two pictures has been collected for you. The red fort is made up of red sandstones. जो रेड फोर्ट है बेटा वो किससे बनाया गया है? रेड सैंड स्टोन से। और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से, सफ़ेद संगमरमर से का बनाया गया है। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. एक अंडर हीट एंड प्रेशर के साथ बेटा एक रॉक दूसरे रॉक में बदला जा सकता है। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया बेटा? इस प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहा गया है। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. Okay, I told you कि जैसे कि molten magma पृथ्वी की सतह पे आता है और वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और फिर वो कौन सी फॉर्म ले लेता है बेटा? सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म लेने के बाद उसमें कौन से रॉक बन जाते हैं? igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. और फिर जैसे कि वो चट्टानें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, वो पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं। और जो टूटे हुए पत्थर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है। और फिर वो हवा और पानी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके वो एक पत्थरों की लेयर बना लेते हैं, पत्थरों की एक सतह बना देते हैं। और फिर वो कौन से पत्थर बन जाते हैं बेटा? सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड व्हेन द igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and the pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. तो बेटा और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। एंड फ्रॉम the main part of the igneous and sedimentary rocks under high pressure, high heat and under certain conditions metamorphic rocks are found. Okay, so now let me show you this diagram, and this diagram is the rock cycle beta. ठीक है, rock cycle. Suppose this is the origin. Okay, ये क्या बेटा? दिस इज अ वोल्केनो और यहाँ से मोल्टन मैग्मा निकला बाहर, पृथ्वी की सतह पे आया और उसने क्या बनाए? उसने इग्नियस रॉक्स बनाए। उसने क्या बनाया? उसने इग्नियस रॉक्स बनाए। ओके, दिस इज इग्नियस रॉक्स। एंड देन व्हाट हैपेंड? इग्नियस रॉक्स हवा के साथ जब वो टकराए तो वो एक दूसरे के साथ उसमें क्या आ गए? क्रैक्स आ गए, उसमें दरारें आ गई बेटा। दरारें आने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ टकराते गए तो वो टुकड़ों में टूटते गए, पार्टिकल्स में बिखरते गए। ओके, और यहाँ पे आके उन पार्टिकल्स को, उन बिखरे हुए टुकड़ों को क्या नाम दिया गया बेटा? सेडिमेंट्स। क्या नाम दिया गया? सेडिमेंट्स। और जैसे कि हवा के साथ, पानी के साथ ये सेडिमेंट्स लाइटली इन पार्टिकल थे, इनमें ज़्यादा वजन नहीं था, तो ये हवा के साथ और पानी के साथ आसानी से बह गए और कहाँ आ गए? एक दूसरी जगह पे आ गए। और यहाँ पे आके इन्होंने क्या बना लिया? एक पत्थरों की लेयर बना ली है जहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और ये पत्थर एक दूसरे से ज्वाइंट कर गए। और ज्वाइंट करने के बाद इन्होंने कौन से पत्थर बना दिए? सेडिमेंट्री रॉक बना दिया बेटा। क्या बना दिए? सेडिमेंट्री रॉक बना दिया बेटा। ठीक है। और अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को साथ में मिला के क्या बना गया बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बना गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक वी हैव मार्बल एंड स्लेट। ओके, एंड नाउ ऐसे ही ये प्रॉपर साइकिल चलता रहता है बेटा। ठीक है, ठीक है, गुड।
I hope the concept of rock cycle is clear to you. I have tried to explain it with the help of diagram also. Okay. Now rocks are made up of different minerals. We all know that कि भाई जो पत्थर होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की impurities पाई जाती हैं. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. Okay, so now this is your question. What are minerals? Okay, minerals are natural occurring substances जो कि कुदरती से आते हैं, नेचर से मिलते हैं, एंड विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels like petroleum, diesel, gas. Okay, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries like iron, aluminium, gold, uranium, steel, etc. in medicines and in fertilizers also. Okay, so now this is your answer of the question what are minerals, and give their examples. Okay, now see this. What are the minerals found in your state? Collect some example to show in your class. Okay, now you have to find out that in India what kind of minerals are found, and you have to make a list. Okay, so now beta see these pictures. Okay, now this is a kadhai, this is kadhai, this is a pan ya tawa, and this is bell, these are ornaments, and this is a hammer, and this is a lamp. So beta these kind of components, these kinds of tools are all made up of minerals. Okay, like kadai is made up of iron, kadai is made up of steel, tawa is made up of iron, aluminium, bell is made of copper, nickel, ornaments are made of gold, silver, aluminium. Okay, hammer is made with the help of wood and iron, lamp is also made with the help of copper. Okay, so such kind of ornaments are made from mineral. So now beta the chapter is complete, and I have discussed all the NCERT readings and exercise also. So this chapter is complete from my side, and if you have any doubt in this chapter you can ask to me. And now it's your homework to complete this chapter and to learn it in with all exercise and all question answer. Thank you. See, these are the question answers which I have discussed in the earlier video also. Okay, so now you can complete it. Thank you.